हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज इस लाइव स्ट्रीम डिस्कशन ऑन द फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग, which is directed by Vasan Bala and which stars Radhika Apte, Rajkumar Rao and Zain Murray Khan. उनका नाम है आई थिंक उन्होंने इस फिल्म में डेब्यू किया था, शायद से हो सकता है। नहीं किया, इससे पहले वो एक फिल्म में आ चुके हैं इससे पहले। ओह अच्छा, वाह, वो उससे इस पहले आ चुके हैं, मुझे आइडिया नहीं था। हाँ लेकिन बट लाइक ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज जो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शो सम लव। बहुत अच्छा लगता है कि लोग सब्सक्राइब करते हैं और जाके और भी वीडियोस देखते हैं। सो या विदाउट फर्दर अडू, लेट्स इंट्रोड्यूस द making the debut on my podcast, which is Biswadeep Pattnayak, जो खुद आई थिंक वो फिल्म्स वाला पॉडकास्ट का डेब्यू है उनका। उन्होंने आई थिंक वो कौन सा फिटनेस वाला पॉडकास्ट किया था एक, लास्ट आई थिंक अभी जस्ट मुझे मेंशन किया था। सो he is here to talk about that film. He also runs वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म ब्लॉग है उनका। सो वो भी चलाते हैं। और कमिंग बैक टू माय चैनल, डॉक्टर डॉक्टर तो यार फिल्मी बॉलीवुड कीड़े मेरे मेरे पॉडकास्ट के। सो बॉलीवुड संवाददाता बोल सकता हूँ अभी तो वैसे। कीड़े थोड़ा इज्जत नहीं बढ़ा रहा है, बट ठीक है, तुम्हारे मुंह से कुछ भी अच्छा ही लगता है। चलो हाँ जी, हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। सो विश्वदीप, विश्वा से ही शुरू करते कि विश्वा कैसा लगा फिल्म, जस्ट कैसे सुनने में आया, और जस्ट अर्ली थॉट्स, योर थॉट्स। I think, I mean, first of all, hi, thanks, Sanket, thanks for the introduction. Hi, Doc, again. So, see, I mean, when I see a movie, जब मैं देखता हूँ ना, of course, I try to avoid trailers. I mean, this is something that I do. मैं genuinely करता हूँ until unless it's something that, you know, जैसे कोई शाहरुख खान की मूवी आ गई या फिर some big star who makes those conventional commercial cinema and all, उनके trailers में देख लेता हूँ. But when I get movies like these, थोड़े से offbeat type के, I mean, considering the roles that Rajkumar Rao plays or Ayushmann plays, I mean, ऐसे कुछ trailers मैं avoid करता हूँ. वसंत बाला का मैं fan हूँ. I'll be honest. मैं गया था to watch this movie. मत को दर्द नहीं होता. For some reason, I don't know, I loved the movie. I mean, मुझे बहुत अच्छा लगा था, and there were literally 2 or 3 people in the theater, including me, and you know, even they were clapping at moments. So I think I had pretty much a lot of fun while watching that movie. And when I realized that he's making this movie with Rajkumar Rao and the rest of the cast, I was excited. Yeah, I was excited. The best part was I tried to avoid the trailer for a few days. I couldn't, and I watched it, and I realized कि उसको काफी अच्छा कट किया था उन लोगों ने. Right? They cut it really well. I mean, they were not letting out a lot of information apart from a few blackmailing वाला angle जो था उसको थोड़ा सा दिखाए थे, and I was pretty excited about what all these characters are doing, right? अब फिर मैंने जब मूवी देखा, like I was mentioning it to Sanket, I literally broke it into 3 halves and watched it as a mini series of sorts क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू था. I started last night and I didn't want to sleep without finishing it, but I had to because it was very late. It was early in the morning by the time I finished the first half, I would like to say. By the time I finished it today, I felt good. I felt happy. The reason I say is because जो मैं expect कर रहा था, right? I'm a pretty big spoiler. I mean, I'm a party spoiler. मुझे पता चल जाता है normally कि you know this is what it would have happened, or generally हो जाता है. I mean, this is what I've said in the group also. मुझे पता चल जाता है. I have this bad habit of second guessing things and all. तो काजोल किलर है जैसा कुछ वैसा spoil कर रहा हूँ. काजल वाला नहीं बताता, but yeah, generally I get to know all these things. So I think and I keep challenging myself when I watch these movies ना, मैं खुद को चैलेंज करते रहता हूँ कि ओके चलो ये किलर है, इसने मारा होगा, इसने ब्लैकमेल किया होगा, इसने फोन डाला होगा, इसने चिट्ठी रखा होगा, and all those things. I keep saying these things to myself. But this movie, I got one angle correct, but the rest of all I didn't. So, and that's why I think when I challenge myself and watch a movie like this and I come out wrong, I'm pretty happy with it. So, overall, अगर बोला जाए यार, I'm pretty happy with the kind of movie. It's a very fresh departure from the kind of movies we have been watching all this while, and I liked it. Yeah, I liked it. डॉक्टर कैसा लगा, जस्ट अर्ली थॉट्स, कब सुनने में आया और कब देखा? सुनने में तो आया क्योंकि नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग काफी तगड़ी थी. वो काफी इन्होंने मार्केट किया एंड विद सच नेम्स अटैच्ड टू द मूवी लाइक वसंत बाला, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता बनाया, जो हम सबको काफी अच्छा लगा. मुझे भी काफी अच्छा लगा. आई लव द popular cultural references. I really loved the whole tone and the whole vibe of that movie. मुझे काफी अच्छा लगा.
It seemed like एकदम एक nerd, एक ultimate movie made by a nerd who's too much into Hollywood movies of the 90s and 2000s, who's into comic books, who's into superhero fantasy. ऐसा एक nerd जब एक nerd fantasy पे एक film बनाता है तो कितना, और इतना with such sincerity तो कैसे निकलती है, बिल्कुल वैसे थी मर्द को दर्द नहीं होता. I really liked it. पेडलर्स में मामी में जाके देखने वाला था, एक उसका स्क्रीनिंग हुआ था बट आई मिस्ड इट, एंड उसके बाद देख नहीं पाया पेडलर्स. एंड बट ऑफ कोर्स वसंत बाला, उनका रेप्यूटेशन तो है, अनुराग कश्यप के साथ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, एंड ही इज very well known, and he's a very reliable name, and I also happened to meet him once personally, very unexpectedly. He's as jovial a person. जितने उनके फिल्म में एक हैप्पी और पेपी टोन होता है, वैसे वो इवन इन पर्सन भी वैसे ही हैं वसंत बाला. So of course with his name attached and names like Rajkumar Rao and Radhika Apte and Huma Qureshi, with such names तो फिल्म अननोटिस तो नहीं जा रहा है. जब से नेटफ्लिक्स इसको मार्केट कर रहा है तब से देख तो रहा हूँ मैं, ट्रेलर गाने सब फॉलो कर रहा हूँ, एंड काफी एक पेपी फील था. But and of course it dropped yesterday, this movie. But the thing is, issue यही था कि there were a lot of other releases which had come along, so I was catching up on a lot of other stuff as well. I wanted to watch ऊंचाई, तो वो देखना था मुझे, and अभी मुंबई में हाल में थोड़े एनिमे मूवीज को दिखा रहे हैं थिएटर्स में, थोड़ा I wanted to catch up a little on that. Well, so much was happening, तो ये थोड़ा पीछे रह इवन गया. And डॉक्टर इवन नेटफ्लिक्स पे ही और एक मेजर रिलीज था इसके, लाइक कल ही हुआ, द क्राउन, लाइक उसके साथ ही रिलीज हुआ था. या हाँ, वैसे मैं वो सीरीज को इतना फॉलो नहीं करता है संकेत, सो आई वाज नॉट सो मच. वो फुर्सत में स्टार्टिंग से देखूंगा, बाद में फॉलो करूंगा उसको. सो एनीवे, सो उसको लेके मैं, इट डिडंट अफेक्ट माय दिस थिंग schedule much, but all these movies had, and so I watched this. फिर उसके बाद I heard some very wonderful word of mouth reviews coming from this. Lot of people saying it is good, it is fantabulous, it's fantastic. ये वो इतना सुनने में आ रहा था, तो I had to check it out. And मजे की बात ये है कि I watched it today between screenings of some other stuff which I was watching, and so it was quite a काफी content कंज्यूम करने का दिन मेरा बन गया. And of course I liked it a lot. I liked Monica, Oh My Darling. It is worth the praise. ऐसा, it doesn't look like a overhyped work. It looks very much as a work which deserves all the praise. And yeah, of course direct Vasant Bala ने किया है, but the inspiration for the whole movie comes from Sriram Raghavan. I mean, this looks like a movie directed by Sriram Raghavan fanboy, I would say. So आई थिंक that's उन्होंने there. And स्पेशल also, थैंक्स स्टार्टिंग क्रेडिट्स में ही दिया है, लाइक Yeah, स्पेशल yeah, थैंक्स that's टू the first thing I and saw. उस फिल्म के काफी राइटिंग क्रेडिट्स goes to योगेश चंदेकर, जिन्होंने, I hope I'm pronouncing his name properly, योगेश चंदेकर, जिन्होंने अंधाधुन भी लिखी थी. उन्होंने ये फिल्म लिखा है पूरी तरह से. So that is another plus point. And of course it is an ensemble cast here, जिन्होंने मिलके इतना पूरा अच्छा बनाया है पूरा फिल्म को. I mean, I liked so many people. So many people had done such a good job. Sukant Goyal, who plays Gaurav in this, उसको लास्ट मैंने दोबारा में देखी थी. He's quite good, unexpectedly good. Also this guy Bhagirath Perumal, जिनको मैंने इसमें देखा था सुपर डिलक्स में as Berlin. He's in this. He's also called Bucks, and he's in this movie. He's credited as Bucks. He plays that guy who's accountant. who also CFO. gets blackmailed. या उनके CFO. कैरेक्टर का नाम मैं भूल गया. या क्या तुमने अभी नाम बताया था? CFO, Just Chief throw the name Financial now. Officer. बिस्वदीप, तुमने अभी नाम बताया उनका, उनके कैरेक्टर का अभी जस्ट? It was a very South Indian name, yeah. उतना पता था कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे, फाइनेंस में भी हाँ, He's the फाइनेंशियल accountant. डिपार्टमेंट में थे. या वो उन्होंने, एनीवे कमिंग बैक टू, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. इवन ही इज done a I think it was wonderful Arvind. job, It and was a Arvind. lot of cast members
have done a good job. Yeah, he's playing Arvind Arvind. Manivanan. Yeah, Arvind Manivanan he's playing. So उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया. सिकंदर खेर, who's all of a sudden in good form. वो कभी कभी कोई फिल्म में when he gets a well written character he is really good. I remember him in this thing तेरे बिन लादेन 2. सिकंदर खेर उन्होंने काफी अच्छा काम किया था उस फिल्म में. That was also a dark comedy as this movie. उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें भी अच्छा काम किया है. Even he was a surprise here. So a lot of people have done a good job in this movie. Even Huma Qureshi, who's I feel since Gangs of Wasseypur, I always felt वो बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छी एक्टर है. Some of it I have seen in Maharani. I've seen some good promise, acting promise from her, and she's done a fabulous job. Rajkumar Rao is a great actor. He's great actor तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, but he's a good actor I'll say. And उन्होंने but he has an issue of not choose. I feel, just my opinions. I feel he sometimes doesn't choose the most appropriate movies. But now he has chosen a good movie, a good role, and he just looks great. He's in great form here. So he's good, and lot of it's a dark comedy done really well, and of course it is a love letter to Sri Ram Raghavan, and it is a very gripping movie. आप एक भी minute bore नहीं होते with whatever that's happening. Something keeps happening, something just keeps happening one after the other, and you're totally hooked till the end. And yeah, as I told you, I watched this between two other stuff I was watching, and so this was like I'll say this is the most engaging watch jo raha between the other two stuff I was watching. That would definitely be this movie, and I liked it. Although I would say it is not as smart as a Sri Ram Raghavan movie generally is. I would say थोड़ा I mean his movies are very smart. वो अपनी बहुत कुछ प्लॉट में जो शॉर्टकमिंग्स है उसको बहुत अच्छी तरह से छुपा देते हैं कि हमारा ध्यान नहीं जाए. ये फिल्म में कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि हाँ यहाँ ये थोड़ा सा दिख गया, वो थोड़ा सा दिख गया, थोड़ा फोर शैडोइंग था. And just like Biswa said, even I could guess some of the stuff. I could make out some of the stuff which was happening. थोड़ा predictable zone में भी गया, but the fun element जो था, the whole vibe, जो fun vibe था, that made the movie a very pleasant watch. And ये सब खामियां हम भूल गए and watched Yeah. till the very end. And मजा आ गया, मजा आ गया I mean, कहीं तो. I just have one point to say. I mean, when was the last time did we see Shiva Rindani, the character, the guy who played Tamang, right? So I think it's been a while. I mean, 90s में काफी देखा गया है उनको screen पे. So Yeah, I don't remember. he's been there. Yeah, through the 90s, he's there, and he's been there in a lot of 90s movies in henchman roles. Yeah, And he's not there. I remember him in Deshdrohi, KRK's iconic movie. उसमें I remember him. बाकी I I yeah. think. So he's there. He's been around, but of course he's there in this movie. उनका भी काम अच्छा ही है, of course. Yeah, it's been good. एब्सोल्युटली. एक्चुअली है ना, अनलाइक यू ऑल, मैंने तो इस फिल्म का ट्रेलर भी नहीं देखा था. मैंने इस फिल्म के बारे में ज्यादा सुना भी नहीं था. जस्ट ये था कि कोई एक फिल्म आ रही है, मोनिका ओ माय डार्लिंग, और पहली बात तो यार ये टाइटल से ही लगता है कि क्या है ये, क्या कोई भी एक रैंडम जैसा टाइम पास एक बॉलीवुड फिल्म आ रहा है. मैं बोला ठीक है यार, मैं तो देखने ही नहीं वाला है. लेकिन फिर जाके नीचे देखा कि ये डायरेक्टेड बाय वासन वाला, तो मतलब ओके, ये तो देखना ही है वैसे, क्योंकि आई एम अ फैन. मैंने मर्द को दर्द नहीं होता का मुंबई प्रीमियर में गया था मैं, यहाँ पे मामी में, और वो ओपनिंग Yeah, फिल्म था, और वहाँ पे उनका Q&A सेशन भी था, तो मैंने वो भी अटेंड किया था मामी में. आई वाज लाइक, मैं शॉक्ड हो गया था. मुझे ऐसे नहीं पता नहीं था कि यार ये मर्द को दर्द नहीं होता कैसा, क्या मामी वाला फिल्म तो नहीं लग रहा था, क्योंकि लाइक कुछ हटके ही था. पॉप yeah, कल्चर रेफरेंसेस और वो सबसे भरा पड़ा. ऑब्वियसली मामी में हम जाते थे एक्सपेक्ट करते एकदम सीरियस डार्क इंडी फिल्म जैसे आए, ये कैसा रप्पन रप्पिरा, कैसा क्या क्या देख के आया था. सो तब जाके, और दैट फिल्म एक्चुअली ग्रू ऑन मी, सो और भी अच्छा लगने लगा था वैसा था. सो मतलब फिर जाके वासन बाला का नाम एक्चुअल में अच्छा लगने लगा था कि यार ये बंदा कुछ अच्छा कर सकता है डेफिनेटली. और
this film Definitely. actually proved me right कि सच में ये बंदा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि इन्होंने वो जो एक कॉमन कॉर्ड पकड़ा हुआ है कि एक पॉप कल्चर के थ्रू या पॉप कल्चर रेफरेंसेस डाल के या अपने पुराने जमाने के जो गाने जो रहते हैं वो सब को कैसे खींच के इस मॉडर्न सेट में पूरा पेश करना, जो लाइक उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से किया है। नो डाउट, नो डाउट जो राइटर है, जो आई थिंक रणधीर ने मेंशन किया था कि यहाँ पे अंधाधुन के राइटर ने ही इस फिल्म को लिखा था, उनका बहुत योगेश। बड़ा क्रेडिट जाता है डेफिनेटली। लेकिन एक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत कम बार होता है जो जब ऐसे ऐसे पॉइंट में लाइक इतने ऐसे एक्टर्स, ऐसा कॉमेडी जो कॉमिक जो हो रहा है, ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी जो चीज हो रही है, वो ऐसा पुल ऑफ कर सके कि ऐसा Yeah. सिचुएशन है, फटी पड़ी है, अभी आगे क्या करे, वो परफॉर्म करना और बिलीवेबल लगना, वो आई थिंक उन्होंने बराबर से इस लाइक ये इस फिल्म में एक्चुअली उन्होंने किया था। जो वही वो एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। एक चीज मुझे थोड़ी खटकी, जो मुझे लाइक मुझे लगा कि आई थिंक बेटर हो सकती थी कि सिकंदर खैर जब भी बात कर रहे थे, लाइक आई थिंक इंग्लिश में बात कर रहे थे, वो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और हिंदी में ही कन्वर्सेशन होता तो और बेटर होता, सिंस ये एक हिंदी फिल्म है, मुझे ऐसा लगा। But नहीं, but लेकिन character के हिसाब से I felt it was okay because he was this rich guy who was the son of a अमीर बाप की आई नो, बिगड़ी आई औलाद नो, थी, आई नो, that लेकिन too in a city like Pune में based है, right, this whole movie. So And he was sitting around in with a a lot of, I think there were a lot of foreigners who he was partying with or something in one of the scenes and all. So I think there yeah, is, so city bred guy who जो एक अमीर बाप का बिगड़ा औलाद है, you can expect him to speak more English than Hindi, so that's आई नो, आई perfectly नो, fine. है ऑल्सो सुहानी, वेलकम hi Hey, बोल Suhani. रहे हैं हम सुहानी। सबको. Hey, Suhani. लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है ना कि बीच बीच में एक हिंदी गाली देते हैं और फिर जाके कंटिन्यू पूरा इंग्लिश में करते हैं, वो थोड़ा ऑफ लगा मुझे कि मतलब वो जैसे आई थिंक लास्ट ऐसा मैंने पाताल लोक में जैसे सुना था कि एक हिंदी गाली दे रहे लेकिन पूरा इंग्लिश कॉन्वर्सेशन रख रहे हैं, तो वो मेल बैठ नहीं रहा था मुझे तभी, तो तो नहीं, अब मुझे बट इट ऐसा लगा। ओके. डिपेंड्स संकेत. आई ये तुम्हारे क्रिटिसिज्म से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा बिकॉज पाताल श्योर। लोक जो जिस शहर में तुम्हारी स्टोरी बेस्ड है वो भी इम्पोर्टेंट है. वो हाँ हाँ, पाताल लोक जो था वो दिल्ली एंड उसके आउटस्कर्ट्स एरिया में था. वहां इफ यू सी द लोकल पीपल वो एंड इट इन्वॉल्व्ड कॉप्स एंड वेरी लोकल पीपल जो एकदम इसमें रहते हैं, व्हाट डू यू से, ज्यादा अमीर घरों में नहीं रहते, गांव में से लोग कन्विक्ट लोग आते हैं एंड इट्स अबाउट कॉप्स एंड देयर इंटरेक्शन. सो दैट विल बी इन अ वेरी देसी लैंग्वेज. इट डिपेंड्स ऑन तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ से है. वेयर इज दिस, आई नो, नो, इट्स आई नो, एक्चुअली अ रोबोटिक कंपनी, एक रोबोटिक कंपनी बेस्ड इन पुणे एंड वहाँ के जो लोग हैं हु वर्क इन दैट कंपनी वहाँ के कैरेक्टर्स है. तो इन अ कॉर्पोरेट कंपनी ऑब्वियसली पीपल विल हैव वेरी पॉलिश्ड, ऐसा ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, देयर मे बी एक्सेप्शंस, बट जनरली एक्सपेक्टेड होता है कि कॉर्पोरेट व्हाट डू से सेटअप में पीपल speak more in English and they are well versed with English and they have that thing of स्पीकिंग इंग्लिश ओवर हिंदी. वो एक रहता है, एक व्हाट इज कल्चर रहता है वहां पे. सो दैट इज परफेक्टली फाइन. सिकंदर खेर's कैरेक्टर निशिकांत स्पीक्स मोर इन इंग्लिश ओवर हिंदी. दैट इज perfectly expected of that character. It's okay. Anyway, I disagree with your criticism, but ठीक है, तुम्हारा है श्योर, वो या पॉइंट. ठीक है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे I देखो, think ये ऑब्वियसली मुझे जब भी मैं देख रहा था ये फीलिंग मुझे आई कि ऐसा लगा ऑब्वियसली, ये मेरी ही फीलिंग थी ऑब्वियसली, लाइक यू कैन लाइक जब भी ऐसे डॉक्टर ने डिसएग्री किया, डेफिनेटली इट कैन लाइक इट्स जस्ट नॉर्मल Yeah. वैसे था। सो लेकिन एट द एंड वही लगा था कि जस्ट इन जनरल जब मैंने लाइक फिल्म देखा और फिर बाद में लाइक फिल्म खत्म हुआ, सो मैं हैरान तो नहीं बोलूंगा, लाइक दंग रह गया, लेकिन एक हैपनिंग मूड में चला गया था कि अब वाओ कि मैंने कुछ फाइनली कुछ अच्छा देखा, अच्छा Hmm. कॉमिक
सटायर सरकास्टिक फिल्म Yeah. देखा, और अनुराग कश्यप भी आई थिंक उन्होंने उनके लेटर बॉक्स में वही मेंशन किया कि वन ऑफ द सरकास्टिक फिल्म्स ऑफ द ईयर ही Yeah. हैज सीन। बेसिकली जो वैसे मूड है फिल्म का, जो मूड वाइब रिदम है मूवी का, इट पुल्स द होल मूवी थ्रू। एंड उसमें आप काफी कुछ आराम से माफ करके देख सकते हो। दैट इज द थिंग। माफ करके मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ फिल्म में ब्लंडर्स हैं, इट्स वेरी साउंड मूवी, बट या सिंस यू आर कंपेयरिंग विद श्रीराम राघवन, आई वुड से हिज मूवीज आर मोर स्मार्ट। वो हिज मूवीज आर मोर स्मार्ट। ही लाइक वो जो भी प्लॉट में थोड़े बहुत इनकंसिस्टेंसीज भी आते हैं, उनको वो ऐसा गायब कर देते दैट देखने के टाइम पब्लिक सोचती नहीं है अबाउट इट। जैसे वो अंधाधुन फिल्म में याद करो, आयुष्मान खुराना स्टार्टिंग में वो अंधे बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, एंड देन उसके बाद तब्बू, देन थिंग्स हैपन, ऑफ कोर्स स्पॉइलर, वी आर स्पॉइलिंग अंधाधुन राइट नाउ। So what happens is Tabu gets him blind, actually gets him blind, actually causes him to lose his eyesight. Now how she does it, that is not shown, and वो एक लाइन में उड़ा देती है कि बहुत सारे तरीके अपना लिया, कुछ ऐसा कुछ वो बोल देती है बस, and that's it. We don't know how she managed to pull it off. Now this would be a glaring thing, but श्रीराम राघवन जो स्मार्ट हैं विद these things, वो उसको छुपा देते हैं। ये फिल्म में उतना स्मार्टनेस, उतना टैक्टफुलनेस का किक मुझे कमी लगी। थोड़े लूप होल्स दिख रहे थे, आई वुड से। लाइक जब भी सिकंदर खेर उनके तीनों के सामने शर्त रखता है कि we'll murder this thing Monica together because she's blackmailed. Okay, now we are spoiling this thing Monica, oh my darling. But since Sanket ka video ka title is spoiler alert, so we are allowed to spoil the movies here. ओके, ये फिल्म देखिए तो ही हमारी वीडियो डिस्कशन देखिए, जस्ट अ रिमाइंडर। सो एनीवे, सो सिकंदर खेर का जो निशी कैरेक्टर है, ही कॉल्स बक्स एंड ही कॉल्स राजकुमार राव जयंत कैरेक्टर जय टू डिस्कस द थिंग। तभी एक जन भी ये नहीं बोलता कि, या जॉनी वो भी उससे बोलते, तो तभी एक जन भी ये नहीं बोलता इफ वी हैव टू मर्डर हर, व्हाई डोंट वी हायर समवन प्रोफेशनल टू डू इट, व्हाई take it on us? I mean, they don't know. It's not shown that Sikandar Kher ka character Nishi, how good he is at murdering people. He just says, "I'll do it," and they are just okay with it. I mean, वो वहाँ पे थोड़ा lack दिखा. Okay, they need not have to agree. They need not have to aggressively say that we need to go to someone professional. But कहीं वो आ सकता था। तुमको कोई आदमी who's more or less a white collar guy आके बोलता है we need to murder someone and just fully I'll do it by myself, तो किसी को थोड़ा डाउट आता है उसके कैपेबिलिटीज पे, वो नहीं था। एंड couple of other such things, ये तो एक early on चीज मैंने पकड़ा, couple of other things were there in this movie that were not so this thing, and also some of the reveals, they were not as this thing, the reveals, they were not very shocking as one would expect. अभी ये जो ये सुकांत गोयल का जो कैरेक्टर है गौरव, वो उसका तो फोरशैडोइंग पहले ही कर दिया था व्हाट ही वाज अप टू, सो इट वाज नॉट वेरी शॉकिंग व्हेन यू केम टू नो गौरव वाज डूइंग इट, और द फैक्ट दैट वो कंपनी का मालिक जो है ही वाज अप टू सर्टेन थिंग्स, व्हेन दैट कम्स आउट आल्सो यू आर नॉट वेरी शॉक्ड एट ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, बिकॉज़ यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट इट, यू कैन सी अ पैटर्न देयर ऑलरेडी, सो दैट्स द थिंग। इफ या So I think Doc ने जैसे बोला सुसंकेत, I mean Doc gave the very beginning, I mean the way it starts the movie, right? It has a very peppy tone, like Doc said, and आपका शुरू में गाना आता है आपका, right? What is the song, Doc? ये जिंदगी आसान नहीं है, right? Yeah, ये जिंदगी आसान नहीं है, yeah. Right? They have that song, and then it's a very peppy song. मुझे काफी अच्छा लगा the way Rajkumar dances on the stage with Kumar's character. Huma Qureshi, and she was really gorgeous. She is really gorgeous in this movie. She's acted very well, and I hope this movie really benefits her आगे जाके. She's a good performer, Huma Qureshi. Yes, yeah. Yes. So आप लोगों ने notice किया होगा at that point of time. So I'll reroute back to Sikandar Khair's character. So they introduce him in a dynamic role, Sikandar Khair. That's what the cast, I mean, जो शुरू में नाम लिखते हैं, right? I mean, dynamic appearance, yeah. Dynamic appearance. Sikandar Khair in a dynamic appearance, yeah. So somehow I have this thing for, I mean, I don't know how I put it across, but again, I have this thing for actors who we see pretty less of,
right? This is Sikandar Khair ho gaya. I mean, he has worked in a few films, of course. I mean, those were different films. मैंने आधी देखी भी नहीं है. But then again, he has gotten back this mojo of surprising people with his performances, like Doc said. अभी हाल ही में आर्या में he was good, and then in this movie they introduced him in a way, and I was pretty excited what this guy is up to, what he is doing in this movie. And जैसे उनका character reveal होता है, I mean, of course there are very few scenes. It's a very small role that he has, but I think the maximum enjoyment that he would have had, I mean, ऐसा देख के लगा कि okay, this guy is enjoying himself, was when he's sitting with this character, Gaurav वाला जो character है, and both of them are looking at the dead body which is hanging from the machine, and he says that मैं उससे बहुत प्यार करता था, and he's like literally giggling and laughing and saying हाँ वो तो दिख रहा है मुझे, and I think Yeah, yeah. those, He's that was totally that was having fun being a he was totally badass. having fun. Yeah, He was totally having fun. I really liked that part. I mean, of course, it was a very small role, yeah, but then again, Sikandar Khair really stood out for me. I think I'm pretty happy that he was a part of this yeah, film. yeah. Hmm. That's the thing. Lot of unexpected, lot of yeah, quite a few unexpected actors did a good job here, and they really shined in this. That's the thing. एंड ऑल्सो आई से एक जो ये मूवी एक टूल जो यूज करती है कि पुटिंग अ वेरी peppy in a very in a situation that could otherwise be very tension that could be very tense, could be very serious, usme they would inject a peppy song into it. They would inject a high peppy and fun song into it and make it light and make it comical. ये element ये फिल्म में बहुत यूज हुआ है. But I feel they kind of overused it. I mean, you use it once, you use it twice in a movie, it looks good. But when you keep doing it, तो ज्यादा हो जाता है. तो सबसे पहले तो ये फिल्म के गाने बहुत the music of this movie is Already, absolutely wonderful. Actually, one of my things is for this अभी आज मैंने देखी और अभी कुछ मिनटों में मैं वीडियो डिस्कशन में आ गया हूँ. मुझे ज्यादा रिसर्च करने को या ज्यादा सब फाइंड आउट करके ज्यादा सबका नाम याद रखने को समय नहीं मिला है. आई एम सॉरी, बट अगर थोड़ा और एक दो दिन मिला होता तो सब एक एक बंदे का नाम, एक एक गाने का नाम सब याद कर लेता. बिकॉज सब एक से एक मजेदार है. अभी जिन्होंने किया है ये अचिन ठक्कर, जिन्होंने स्कैम 1992 का टाइटल स्कोर कंपोज किया था, और रिया मेरी गर्लफ्रेंड वाला गाना जो वो कंपोज किया था, और रॉकेट बॉयज का भी उन्होंने किया था टाइटल कंपोज, टाइटल थीम. एंड उन्होंने ये फिल्म का म्यूजिक दिया और क्या लाजवाब दिया है. ईच एंड एवरी सॉन्ग इज, although all songs are supposed to be peppy and fun, they don't seem repetitive. Each one is so different from the other. जैसे बिस्वा ने अभी बोला ये जिंदगी आसान नहीं है, is the song which starts the movie, and वो जो पूरा टोन, जो पूरा वाइब है वो फिल्म का ये एक गाना लेकर आती है. देन उसके बाद there is this very wonderful song when Rajkumar Rao's Jayant is just thrown out from the ceiling and he is dangling somewhere, and there is one piece of evidence which has fallen with him, and he's just trying to get it, and he's trying to save his own life, and he's trying to protect that piece of evidence too. And then there's this insanely fun song, this फर्श पर पड़े और समथिंग नाम है वो गाने का. yeah. इट इज सो गुड, इट इज सो गुड. मैं वो गाना खाली रिवाइंड करके वो सीन वापस प्ले किया जस्ट टू प्ले दैट सॉन्ग. इट इज सो मच इन वाइब ऑफ ऑल दोस 50s 60s मेलोडीज, एंड द वे इट इज मेड सो फन. वो एक गाना बहुत मुझे अच्छा लगा. Then of course, when Rajkumar Rao's this one Jayant and Monica, Uma Qureshi's Monica, they are having, they're wrestling each other. There is this Malabar, there's this wonderful song playing, which just eases the whole mood. And Tension. क्या उसका कुछ तो नाम था, ऑन द मलाबार हिल्स ऐसा कुछ नाम है वो गाने का. वो भी क्या लाजवाब गाना है. एंड वो एकदम मूड बना दे. वो एकदम, इट इज सपोज्ड टू बी अ ग्रूसम फाइट बिटवीन these two, and it can come across very brutal and insane, and but it's not. It's made very light and it's made very fun, and also the kind of things they do. Him ekdam what do you say, climbing on the walls just to strangulate her with the belt, and the way it's made very funny. That dark humor जिस तरह से डाला है वो काफी अच्छा किया है. ये गानों को अच्छा यूज किया है, बट थोड़ा कहीं पे आई फील ओवर यूज हुआ है. लाइक एक सिचुएशन दो सिचुएशन में थोड़ा ये फनी हो जाता है, बट देन दे कीप रिपीटिंग इट, तो फिर थोड़ा लगता है अभी ज्यादा हो रहा है बॉस. थोड़ा
till the point you can say अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वहां पे थोड़ा, वहां तक थोड़ा लेकर आए हैं, बट इट्स ओके. बहुत ज्यादा नहीं किया, थोड़ा ओवरडू किया, बट इट्स परफेक्टली फाइन, आई से. एक्चुअली ना मैंने मैंने एक ये फिल्म फुल ओपन माइंड जैसा देखा. मैंने पहले भी बोला, जैसे मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस चलो देखते हैं. और मैंने क्राउन का एक एपिसोड देखा और मैं बोला चलो कुछ ये वाला देखते हैं, और फिर मैंने ये देख लिया. सो मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं था. लास्ट में वो जो हुआ, वो रिवील हुआ कि ये तुम्हारा साला या साली होती, तो वो भी मुझे एक हैरान जैसा, ओ बाप रे, वो जो मनोरमा 6 फीट अंडर में जैसा कुछ फीलिंग आया था, वैसा नहीं हुआ था. लेकिन क्योंकि वो फीलिंग, आई डोंट नो, वो टोन की वजह से नहीं आया, बट जस्ट इट्स ओके, मुझे ऐसा लगा था. लेकिन हाँ, वो जो एट द एंड पता चलता है कि राधिका आप्टे उन लोग के साथ मिली हुई है, वो थोड़ा ऐसा लगा, अरे बाप रे, इसके साथ ऐसा, ओहो, वैसा था. Also, और Radhika Apte has that Naidu, that Telugu character. I don't think it मेरे works को जमा very नहीं, well. मेरे को जमा नहीं. So I she didn't looks, she has too much of that Maharashtrian thing, टोन टू हर, एक्सेंट टू हर, वो जो जाता नहीं है, उनको महाराष्ट्र नहीं रख देते तो वो सेम कैरेक्टर को तो ठीक रहता है. एंड ऑल्सो आई फील शी इज काइंड ऑफ द वीक लिंक. लाइक उनको देख के भी वो जो इंटिमेट, शी इज प्लेइंग एन इंटिमिडेटिंग कॉप, बट शी इज ऑल्सो क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टिंग. वो बोलती है इन द फर्स्ट सीन, शी सेज इतनी खूबसूरत लगती हूँ ना मैं करके, शी सेज लाइक दैट. ओके, शी ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, बट समहाउ इन दैट रोल ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी. Although she is a good performer otherwise, Radhika Apte somehow यहाँ पे I think it थोड़ी was कम screen लग time गई doc. because everyone else was so good also. Yeah. I think it was screen time doc. I think Radhika के character को they could have shown her to be more menacing, in her own way, of course, right? I mean, or probably they could have shown how exactly she's creating more problems for Rajkumar Rao and the rest, जो कि कभी हुआ ही नहीं, right? I mean, she was only shown in And very few again, scenes. the same thing which they were doing with Radhika Apte's character in a Sri Ram Raghavan movie that was done much better, I'd say. That would be Badlapur, जिसमें Varun Dhawan goes to meet a lawyer, and वहाँ पे he sees Ashwini Kalsekar mopping the floor. Yeah. And so he tells her, "Jara mem sab ko bulao." And she says, "Okay." She just says, "Okay." She keeps her bucket aside with the ladi pocha in it, and she just turns around and she wears the black coat and she says, "Yes, I am the lawyer." So says, अपनी सेहत बनाने के लिए घर का काम खुद करती हूँ करके she tells. So the way that was done, contradicting one important, one powerful female character by showing her doing something else, वो that was better pulled off. यहाँ पे they were attempting that, but राधिका आपके थोड़ी जमी नहीं in that role, I'd say. Yeah. बदलापुर में fair राधिका enough, आपटे थी, उन्होंने काफी अच्छा काम किया उसमें, no doubt. Yeah. fair Otherwise she's a enough. good actor, no doubt. Yeah. एब्सोल्युटली, बट एक चीज थी कि ये बोलते ना कि ये बॉलीवुड में काफी डार्क कॉमेडी थोड़े कम जैसे बनते हैं, और आई थिंक इन जनरल Mm. मैं चाहता हूँ, Yeah. मैं चाहता हूँ ऐसे कि और ऐसे तरीके के फिल्म्स बने, जो Uh, ऑब्वियसली इट्स बोलते ना कि पॉप कल्चर से जुड़ी हुई है. वसंत बाला से ये एक्सपेक्टेशन तो रख सकते ही है अभी तो, कि वो कुछ अपने या खुद के बॉलीवुड कल्चर से में ही डार्क कॉमेडीज कुछ कनेक्ट करे. डेफिनेटली और बने. बॉलीवुड में डार्क कॉमेडी, सॉरी संकेत, आई थिंक आई कट इनटू नो व्हाट नो यू नो. आर ऑलरेडी सेइंग. हाँ, बॉलीवुड में डार्क कॉमेडीज डेफिनेटली बने, बट अच्छे ही बने. वी डोंट वांट मोर बच्चन पांडेस अराउंड. या सो या वो तो बने. एंड हाँ, वसंत बाला इज डेफिनेटली प्रॉमिसिंग. एंड ये फिल्म देख के और उन पे भरोसा आ रहा है कि वो कुछ और अच्छा दे सकते हैं हमको आगे I भी. have Hope something so. to add. I have Yeah, something to या sure, add. sure, बोलो. sure. Yeah. So, guys, so see, dark comedy is something. I mean, I think I got familiar with this term somewhere around 2014 or 2015, maybe. So when I got to know about dark comedy, I would have seen a lot of movies which are in this particular genre. And I think Fargo, जो मैंने देखी थी, right? The Fargo, the original movie, and I realized, okay, this is what dark comedy is. इसको ऐसे treatment बोलते हैं. It might be a genre, it might be a treatment, depends on what you call it. The most striking feature of a dark comedy is for the jokes to land well.
right? वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी Yeah, है. for any And comedy for that matter. for Yeah. any comedy for that matter. But the Yeah. difference between a potboiler, right, जिसमें comedy हो रहा है, say we are watching a Rohit Shetty movie and then we are watching a Vasan Bala movie and both are making comedies and this is a dark comedy and that's a regular comedy. So for the joke to land is equally important for both the genres. But आप रोहित शेट्टी वाली मूवी में you can get away with a funny with a goofy joke. And for Yeah, you can a use movie like slapsticks. this too, you You can use can slapstick. use slapsticks and get away and still do it. And you can use insult humor. You can use You slapsticks. You can do can use that, pop culture references. Dark right? comedy में you don't have all डार्क कॉमेडी those privileges. काफी इंस्टिंक्टिव होता है. आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि उसमें छेद करना पड़ेगा तो डेड बॉडी अंदर जाती है. वो बोलता है कि आई मीन ही ऑब्वियसली यूजेस अ स्लैंग एंड सेज दैट इट्स Yeah. फिजिक्स, आई एम नॉट अ सीरियल किलर. And he सो uses आई a थिंक pop culture reference. मेरे पास जॉनी इब्राहिम की बाइक थोड़ी ना है कि मैं ऐसे लेके जाऊं. I am, and that's where the life talk comes. कि मैं ये I'm a biker. I'm not a truck. I'm not a van driver. तुम लोग ने मुझे van driver बना दिया है. All those jokes come into play. Yeah, really I good. think these landed well. The jokes pretty landed well. They didn't derail Yeah, the story. They were not forced into the script. ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा. So I think I pretty much liked the way the fun part was handled in the movie. yeah, Yeah, sure. Yeah, एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था कि लाइक ऐसे इन जनरल डार्क कॉमेडीज बनते रहे और आई थिंक लास्ट मैंने अगर बॉलीवुड में देखा हो तो अंधाधुन ही था. उसके बाद अगर कुछ आया हो मुझे आइडिया नहीं रहेगा कुछ ज्यादा, लेकिन लास्ट बेस्ट कुछ देखा हो तो सच में अंधाधुन ही है. और जैसे कि रणधीर ने पहले से ही बोल के रखा था और ऐसे लग भी रहा था कि जस्ट लाइक ये फिल्म श्रीराम राघवन से लाइक उनके फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड है ही डेफिनेटली. लेकिन एक yeah. And चीज there is a Johnny Gaddar को एक they've actually shown someone watching Johnny Gaddar in this movie. Yeah, जब वो सांप आता है इवन ना तो at the point of time yeah, he's watching it. एक्चुअली इवन ये इससे आ भी रहा था और इवन मुझे एक बहुत अच्छी पार्ट लगी कि ये उनके जो क्या बोलते हैं वसंत बाला यूनिवर्स की फिल्म जैसे लग रही थी क्योंकि वो मर्द को दर्द नहीं होता. yeah. ओके, कैरेक्टर्स भी यहाँ राधिका पे आ मदन रहे को थे दिखा Yeah. है. और इवन You saw Abhimanyu, right? अभिमन्यु Abhimanyu दसानी was there. अभिमन्यु दसानी भी आता है Yeah, I know. और लाइक एक Abhimanyu सीन में. Dasani और Gulshan Deviya भी थे, but they were not exactly playing the same characters. I think Radhika, they were not playing exactly the same characters from Mard को दर्द नहीं होता है. Am I right? No, of course not. नो Yeah. सिर्फ जस्ट एक कैमियो पता चलता है कि वो सेम यूनिवर्स से है, लेकिन ऑब्वियसली राधिका मदान का तो पता चलता है क्योंकि वो सुप्री बुलाती है और मुझे याद Yeah, आ गया Supri. कि She's हाँ playing the उनका same कैरेक्टर character, Supri. Yeah. एग्जैक्टली उनका नाम सुप्री था इसलिए शायद से वो ऐसा था. लेकिन वो जो मर्द को दर्द नहीं होता का कैरेक्टर जो था ना उसमें वो लाइक उसका नाम जैसा नहीं है, लेकिन हाँ वो अपीयरेंस है तो पता चल जाता है कि अपने को ये उनका लाइक वो The जो same यूनिवर्स actors काइंड ऑफ coming जैसे up. था. Yeah. एग्जैक्टली वो एक चीज बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत स्मार्टली अच्छी लगी थी मुझे. So was एक Gulshan चीज Devaya आप there in that doc? Sanket, मुझे did I नहीं miss पता something? यार. Sorry. आई Was डोंट Gulshan थिंक there? सो. Yeah, he has a voice appearance. So Nag, when the जब वो पता चलता है कि Arvind and his family got killed by the Nag, तभी एक Nag expert को बुलाते हैं ना, who Yes. says something. एक voice. That Oh voice is God. by Gulshan Deviya. Oh, I didn't realize that. I need to watch it again. Thanks, doc. Yeah. सेम एक्चुअली. Yeah. लेकिन नाग से याद है लाइक हाउ डिड दैट प्ले आउट, लाइक आप लोग को कैसे लगा वो पूरा लाइक I really love that क्योंकि cut-off scene जिसमें when Rajkumar Rao का वो जयंत कैरेक्टर के सामने पहले बार जब नाग आता है तभी he goes to एक बचपन के एक सीन में चले जाता है where he is trying to focus and he is trying to study something, learn something in Marathi, and then he uses that and he just tries to stare at the snake into the snake's eyes for as long as he can so that it goes away on its own and it finally does. जिस तरह से वो use किया है that flashback scene, I really liked it a lot. Yeah. I think he did mention that. I think राधिका आप्टे के कैरेक्टर को एक सीन में मेंशन करता है, राइट, कि बचपन में उसके बैग में किसी ने सांप डाल दिया था and he has that fear of Yeah, yeah. snakes ever since. So was that a reference to the same? ऐसा हुआ था कि maybe दिन में उसके स्कूल में बैग में वो सांप निकला और रात को he was not able to focus and he was remembering that point of scene, that part of his life, and he was trying to tackle it और सांप चला जाता है. But I'll be very Yeah, I honest. mean, वो बचपन में they don't show him. वो बचपन में he mentions it to Radhika Apte, but they don't show his kid version actually in front of a snake. वो जो I think as far as I remember वो जो kid version जब भी दिखाते हैं he's trying to learn something
he's trying to focus and learn something, and then he just remembers that he needs to focus, and he just stares into the snake. Yeah. But last वाला जो scene था, I mean, Sanket Doc, I don't know, somehow it didn't land well for me. The third act, as you guys call it, right? I mean, या थोड़ा somehow, जबरदस्ती का था, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ फोर्स शैडोइंग. जब उसको फाइनली वो मिलता है एग्रीमेंट एंड ही इज ऑल एक्साइटेड, यू नो, अच्छा नाउ ही इज नॉट कुछ तो गोइंग हो टू रहा है, हैप्पीली गो होम, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू हिम. going to happen. ऐसे एकदम स्ट्रांगली लग रहा था व्हेन यू लुक एट दैट सीन. एंड Right. देन उसके बाद व्हेन दैट सीन प्ले, एंड उसके बाद जस्ट स्नेक्स कमिंग आउट फ्रॉम बोथ साइड, लुक काइंड ऑफ, यार ये तो हो चुका है थोड़ा. you're taking a convenient step as a writer, ऐसा थोड़ा लग रहा था. And then Yeah. उसके बाद आजकल तो lot of movies close with an open end. ये भी आजकल होता है. So even the open end was not really in favor. Something more innovative would have worked. Yeah, but it was, Yeah. ठीक है, बुरा नहीं था, not very bad as such. Didn't spoil the movie as such, but yeah, थोड़ा underwhelming लगा, but not something that would just spoil the movie for you. Yeah. True. How about you, Sanket? एब्सोल्युटली. Since मुझे you तो asked. यार एट द एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यार. मतलब मैं सच कहूँ, मुझे आप लोग के क्रिटिसिज्म यहाँ पे पहली बार सुनने में, और यही मैं चाहता हूँ कि ऐसे डिस्कशंस में लोगों के अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनने मिलते हैं. लेकिन जब भी मैं देखा तो मुझे ये सब लाइक लेजिट ज़्यादा कुछ लगा नहीं. मैं तो मस्त टाइम पास के लिए बस ऐसे ही देखा कि ओके, मैं कुछ एक बॉलीवुड फ़िल्म देख रहा हूँ, और उसमें ऐसे थोड़ी-थोड़ी जेम्स बॉन्ड वाले रेफरेंसेस भी थे. टना टना, ओह माय गॉड! लाइक मतलब मैं खुद मज़ा आ रहा था जब देखना. और फर्स्ट हाफ एक्चुअल में मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं पूरे फर्स्ट हाफ में हँस रहा था. मैं लाइक और कुछ नहीं, सिर्फ हँस रहा था, और मैं एंटिसिपेट कर रहा था और हँसी आएगी, और ऐसा ऐसा डेफिनिटली हुआ था. सो लाइक दैट एक्चुअली प्रीटी मच लाइक मतलब संतुष्टि दे दी मुझे, कि जो जो बॉलीवुड फ़िल्म संतुष्टि नहीं देता है, और अनफॉर्चुनेटली फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है. ये दिस काइंड ऑफ केम इट एज़ अ लाइक अ सरप्राइज़, दिवाली सरप्राइज़ के पोस्ट दिवाली सरप्राइज़ के, वॉव! कि कुछ अच्छा बॉलीवुड में आ गया और देखने में मिल गया, हँसी भी आ गई. Yeah. और एक ऐसा बोलते हैं ना, खुद के कैरेक्टर्स अपने आप को स्मार्ट नहीं समझते थे. वैसे थे लाइक अनलाइक मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड फ़िल्म के, भाई मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ, वैसा नहीं था. बहुत अच्छा था, राइटिंग यहाँ पे स्मार्ट थी, तो इसलिए मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए तो Was there any ऑब्वियसली. Makbul reference, guys, in that movie? I read in one of the reviews there was a reference to Makbul. I didn't find any. I don't know which part did they mention it. I अच्छा, don't know. मुझे I भी think when one हाँ, of the याद नहीं आ रहा. वैसे ये फिल्म वैसे एक एडेप्टेशन है एक हाँ, जापानीज नॉवेल एग्ज़ैक्टली. की. Yes, we didn't talk. Yeah, Yeah. because this thing, it's called Brutus into okay, I can't get the name properly. It is no Shinzao, Brutasu no Shinzao by Keigo Higashino. I hope I'm pronouncing it all properly. तो ठीक है, वो मैंने थोड़ा बहुत उसका समरी पढ़ा आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी. एंड it kind of, I think, only the basic plot about one woman who's pregnant with a baby, and she's trying to, you know, blackmail three guys. इसमें one of the characters is the protagonist. उतना part उन्होंने लिया, and then they've made their own story out of it, ऐसे लग रहा है. So yeah, let's see. But अच्छा है, like whenever a novel is faithfully adapted, तब अच्छा लगता है. When what do you say, a novel which is a good crime novel or a thriller novel is properly adapted, अच्छा लगता है. I'll tell you one instance where actually a novel with a good story was not properly adapted and watered down like anything for Bollywood. That was Prem Ratan Dhan Payo. वो I haven't seen it. I'm so कौन-सी sorry. नॉवेल का yeah. था तो मुझे वो भी नहीं पता है, लेकिन छोड़ो, हाँ. जानने की ज़रूरत नहीं मुझे तो. Yeah, it is based मैं on a fantasy novel, and बिल्कुल उस स्टोरी को इतना जो वाटर डाउन किया उन्होंने, क्या बताएं. बाप रे! मैंने वो फ़िल्म बहुत जब ये आया था तभी देखी थी, ओह बाप रे!
not seen it. संस्कार Sorry, bhai. संस्कार ओ बाप रे, नहीं सच में मतलब रांची प्रोडक्शंस की थी वो फिल्म। नहीं बट अभी मैंने ऊंचाई देखी थी कल। आई से ऊंचाई एक सिंसियर एफर्ट है बाय द डायरेक्टर सूरज बरजातिया to tell a sincere story. I'll give him marks for that. To go out of his league and attempt something, I'll give him credit for that. Definitely. श्योर, Yeah. एक्चुअली मुझे देखना चाहिए वो फिल्म। Yeah. एक्चुअली सोच रहा हूँ डेफिनेटली वो फिल्म देखने का, सिंस इट इज ऑन मूवी गो एज वेल, ये हफ्ते के लाइक वो सिलेक्शन में है। सो लेट्स सी, अगर देखना हो जाए तो वो भी देख लेंगे और क्या वैसे। सो Guys, I या have a थैंक यू question for गाइस, you थैंक्स। guys. I mean, या I mean, श्योर श्योर, एक I don't know या if we are summing it up, or maybe I should reserve it for the last. But my question is, if you have to pick one character from the whole movie, right? Tell me why, and who is that, and why is that? I mean, aap batao. One What do you think? character who stands out in the whole movie. Yeah, yeah. I would pick up Nishi, Sikandar Khair's character. Okay, okay. Why would you do that, Doc? Any reason? I He's mean, he's having fun. he's not just having fun. He seems like this cat. Okay, he's a other. If you look at him from a certain perspective, oh, he's just a एक बड़े बाप का की बिगड़ी औलाद, just a spoilt brat of a son of a rich father. But still, he's very interesting. He's in his mannerisms, in his behavior, he's very interesting, and even the way he confronts when he just that one scene where he lays down the plan for all the three people, and the way he just the way he interacts. He's talking with two guys he otherwise doesn't like. ये Jayant को तो he doesn't like at all. He doesn't like this Rajkumar Rao's character at all, because he's taken his position. His father thinks more of Jay as a spiritual son, and but now he must talk with him to negotiate a deal. So at that time, even when all this situation, just the way he's so enigmatic, so he's having so much fun while doing that whole thing. वो देखकर उसको डेफिनेटली उस पर एक आता है यार, ये एक अच्छा है. आई रियली विश वी कुड हैव सीन मोर ऑफ हिम. आई रियली विश द मूवी हैडंट डिस्पोज्ड हिम ऑफ अ बिट टू सून. ही वेंट अ बिट टू सून. थोड़ा रहना चाहिए था. आई थिंक सुहानी कुछ लिख रही है कमेंट्स पे, इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट दे शंकर वेंट टू जयकिशन. शंकर जयकिशन फॉर इंस्पिरेशन एंड नॉट जस्ट पंचम। Yeah. Actually, the music is very much inspired by a lot of 60s, 70s Bollywood. अभी, as I said, मेरे को उस समय बहुत कम मिला to go through everything. Otherwise, मैं एक एक गाना सुनता and I would trace sounds कहाँ से लिए, वो sounds मतलब कौन से गाने से inspire होके उन्होंने लिखा है, वो I think compose किया है, and I would go that deep, but I couldn't because आज ही देखा and just few minutes later I'm here for discussion. Yeah. I think the Definitely. first song And I've was picked essentially Sikandar a Khair's character, recreation. Nishi. Sorry, Yeah. Doc. I think the first song was essentially a recreation of Piya Tu Ab To Aaja, right? I think so. Yeah. Yeah. Right? Monica, And oh the my way darling. so they use it as a background score and lot many times ahead in the narrative, or this song keeps playing when something goofy happens, जब कुछ गड़बड़ होता है, and the way it is Yeah, being played in definitely. the Yeah, background, I but mean, it's really Monica related because गाने में भी Monica, oh my darling, and this character who's causing the havoc is Monica. So yeah. वो आना ही था ब्रो, मतलब वो गाना अगर नहीं आता तो यार कुछ नहीं होता, ऐसा था। वो गाना तो रखना ही था इस फिल्म में, ऐसा था। Yeah. Sanket, ऑल्सो Sanket, सुहानी बोलती है who's your संकेत, pick? तुम बताओ, तुम कौन से Yeah. कैरेक्टर को पिक आउट करते तो स्टैंड आउट इन द होल मूवी? निशी, मैं बता देता हूँ. स्टैंड आउट करता है वो जो बंदा जो लाइक स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है, जो हु इज रिस्पांसिबल फॉर द Sukan Goyal? डेथ, लाइक Sukan सुगंध Goyal. Yeah, गोयल, the या Gaurav character. गौरव गौरव Shalu's husband. Yeah. माइंड ब्लोइंग। मैं स्टार्टिंग Yeah. से ही लगता है बहुत अच्छा था, और वो एकदम सुमड़ी में छुप के रहता था, ऐसा था। लास्ट में पता चलता है कि ही इज द वन, वैसे बहुत अच्छा था। काइंड ऑफ मुझे बोलता ना उसकी नवाजुद्दीन फ्रॉम बदलापुर जैसे वाइब्स दिला रहा था मुझे बहुत कुछ, Yeah. लाइक बीच में कि लाइक ये ऐसा कुछ कुछ सच में Yeah, ऐसा he was देख रहा है, he ऐसा was कुछ। scheming and he was एकदम the scheming guy in the background. और सुहानी ने लिखा है they brought orchestra singers who sing in the voice of Asha Bhosle and Rafi for the album. Yeah, the sound is very sound पे बहुत ध्यान दिया है music पे to sound like those to have that retro effect. Yeah.
let's accept that the film does get Formulaic, little like. या इट इज प्रेडिक्टेबल तो बोलूंगा मैं. फॉर्म्यूलाइक पता नहीं, Exactly. बिकॉज अपने हिंदी फिल्मों में फॉर्म्यूलाइक तो ऐसा फॉर्मूला पे आई डोंट थिंक ज्यादा फिल्में बने हैं. सो आई वोंट से फॉर्म्यूलाइक. प्रेडिक्टेबल I would accept that it gets it doesn't be because it's not as unpredictable as someone would expect it. Yeah. Yeah, तुम दो तो बोलो कुछ बोलना चाहते हो तो about it. Yeah. No, About what absolutely. think Swan said that the movie gets formulaic. Yeah. formula इसलिए नहीं बोल सकते हैं. What I feel is because we don't get to see a lot of movies in this genre for Hindi cinema, or but inevitably, if it gets predictable at certain points, and I think it kind of derails the fun. I mean, that is the only issue I have with a movie like Monica Oh My Darling. Otherwise, I Yeah. don't think it's a formulaic treatment as such. At times, it does feel like it. I agree with Swani too in part. So I'm kind of divided here. Also the cutoffs इसमें जो what do you say, ये फिल्मों में जो भी those scenes where people imagine certain things to play out in a certain way, like that Arvind imagine करता है how Monica would have killed this one Nishi, and उसमें पहले she chops him up with that किल बिल this जैसा thing, लग रहा था बहुत बार Mortal मुझे. Kombat वाला एक music देते They वो show लोग. And on that night. yeah, they show his poetry. fantasy, how it Man. would have played out. Or she would have got some help and she's shooting him, and then there is one guy patiently waiting for him to take the bullet and for that, just take him away. Those Like scenes, पता legit रहता है मुझे किल बसंत बिल जैसा बाला लग का रहा था. मैं सिग्नेचर आपको स्टाइल बोलता हूँ. क्या है. Yeah. Kill Bill. Absolutely. और वैसे मस्त वो दर्द नहीं influence होता जैसे कि भी उठाए. स्टार्टिंग सीन में when they show that Terminator reference, जिसमें they also show his mother and she's kind of Sarah O'Connor from the Terminator 2 movie. And Terminator Yeah. OT2 Arnold wala Terminator comes and rescues her. The way that is shown, totally ekdam, that's just Vasant Bala out there just having fun with nerds, having fun with nerd fantasy right there. Yeah. But I think I'll answer the question which I asked both of you. So मेरे लिए it's a very close call between Sikandar Khair and Huma Qureshi's character. The reason I mentioned Huma is because there's been a lot of praise coming her way, and deservingly so. Like Doc said in the beginning, she has somehow lost her way after Gangs of Wasseypur compared to the rest of the cast, right? Maybe she hasn't got those kind of movies. I think Badlapur she was there in Badlapur, right, guys? So Yeah, she was Yeah, there in Badlapur. that was it was a very small role, but she did manage to shine in that, I would say. But overall, dekha jaye to Huma is someone who has she's a performer, right? I mean, we all know that. I mean, she has done good work in whatever she got until all this while. But isme she's playing a character. I mean, oomph secretary jisko bolte hain, right? I mean, and she's in a robotics company. She's an assistant to the CEO, if I'm not wrong. And then she's spreading her favors amongst I mean everyone, literally everyone in office. And then that one dialogue, so the way she justifies herself. I just ask people for GST tax. I give yes, people service and I just ask them for GST tax from time to time. and The after way one she, immediately I say, हाँ यार तू सही बोल रही है, and uh, yeah, that and was a also nice scene. she has that Goan, what do you say? She has that Goan vibe to her. The few dialogues she says in English, it sounds like it's coming from a Goan person. Yeah, अच्छा था. That was really good. Yeah, That's she good. was That's good. good. Yeah. So one character that didn't land well for you guys. Sanket, we'll start with you. मुझे सच बोले ऐसा नहीं लगा कुछ भी. लाइक कैरेक्टर, हाँ एक ऐसा था, लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला तो मुझे ऐसा फील हुआ था. ये सिकंदर खैर का कैरेक्टर जस्ट जो बहुत थोड़ी ज्यादा इंग्लिश मुझे ऐसा फील हुआ. ऐसा. Right. लेकिन उसके अलावा मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी. ऐसा कुछ सच में नहीं लगा मुझे. आई एंजॉयड इट. बट डॉक्टर, I know Doc's answer. So me and Doc, we have the same answer, right, Doc? Yeah, the Radhika Madan Naidu character. Radhika Apte. She was written राधिका well, but the casting was Apte. kind of not in place for me. Yeah. राधिका Yeah. आप्टे एक्चुअली. आपने मदन Sorry, बोल दिया Radhika Apte. Did I just say Radhika Madan? I'm Because so we love sorry. Madan. Yeah. Okay, Radhika Apte as Naidu. That character didn't
land well because she was actually written well. Thoda casting I would say was not appropriate. Yeah. The concern was that I think I remember, of course, trailer में तो नहीं दिखाया था, but then there was some reference जहाँ पे उन्होंने दिखाया था राधिका confessing that she accepts bribes, right? कुछ खर्चे अपने संभालने के लिए she accepts bribes. I don't know, it was a, I mean, जैसे trailers के साथ they show some sort of a marketing, stuff for a movie. कहीं तो मैंने देखा था. So this whole movie I'm watching this, she's this do-gooder in the movie. और मैं सोच रहा हूँ कि why did they show that scene जिसमें दिखा रहे हैं कि she's confessing to have been accepting bribes and all. और अंत में जब पता चलता है, then it kind of gave it away for me. That point of time I didn't feel very shocked. So But I would still say that the character was well written. जब भी end में पता चलता that she was always working with this one, the owner of CEO. the CEO, and she was just having fun with Rajkumar the whole time. She was having fun with Jay the whole time. And when that comes along, तो थोड़ा it should give up. तब लगता है कि हाँ character बुरा लिखा तो नहीं गया है. Quite well written character. That's why Something in she's dialogue. whenever he feels she might just catch him, she might nab him. वो हमेशा उसको छोड़ देती है हल्के में because she's not interested in catching him at all. She's just And having fun with. this dialogue that she has, that she repeatedly says, ना हल्के में ढीला नहीं छोड़ना and all, and don't give away Yeah, everything. tight मत पकड़, थोड़ा ढीला छोड़. ढीला छोड़. Yeah. That's a nice one. That's a nice line that she has. Yeah. So yeah, I think we should end this conversation now. So बहुत actually बात हुई, expectations से ज़्यादा ये बात हो पाई है इस फिल्म पे. मुझे बहुत अच्छा लगा. Obviously at the end लोग डॉक्टर आया इस फिल्म पे बात करने. मुझे ऐसा लगा कि यार इस फिल्म पे बात करने के लिए डॉक्टर is the like the right person. क्योंकि और एक संतोष हो सकता है, क्योंकि संतोष को भी हमारा एक दोस्त है, like for the audience, like कि संतोष भी एक ऐसे ही फिल्म्स के बारे में बात कर सकता है, जो like he likes all these films. वैसे so बहुत अच्छा लगा. बिस्वा भी ये पॉडकास्ट पे डिस्कशन पे आया. So yeah, thank you so much guys. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का. Biswa has been a good contributor to this discussion. I'll say that. Yeah. Thanks, भाई. मम्मी बुला रही, खाना खाना है. Bye. Sure thing. Yeah. And hopefully we'll Thanks see you for the soon. invite, Sanket. Thanks, Doc. Good night, guys. Yeah.